फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी स्क्वायर रूट ट्रिक के बारे में। यानी अब स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना हुआ बहुत आसान। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले मेरे आगे के वीडियोस के। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें पहले वाले चार्ट में डिजिट्स है, सेकेंड वाले कॉलम में स्क्वायर्स है इन डिजिट्स का और थर्ड कॉलम में लास्ट डिजिट है स्क्वायर्स का। यानी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 3 का स्क्वायर है 9 और इसका लास्ट डिजिट है 9। 6 का स्क्वायर है 36 और लास्ट डिजिट है 6। 8 का स्क्वायर है 64 and last digit is 4. Here 9 का square is 81, last digit is 1. This is how I prepared the chart. Now take an example. Suppose if I want to find square root of 1,444, how would I find it? Step 1 is to write the number and check the last digit. तो यहाँ पे मेरा last digit 4 है, तो last digit वाले कॉलम में देखूंगी 4 कहाँ आता है। तो 4 एक 2 में आता है और 8 के यहाँ आता है। यानी 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 64 है, तो उसका लास्ट डिजिट 4 है। तो यहाँ पे मुझे दो नंबर्स मिल रहे हैं, राइट? सो आई विल क्रिएट टू ब्लॉक्स। In the second block I will write 2 or 8 because I am getting two numbers. Then I will ignore these two numbers. मतलब ये दो नंबर्स को मैं अब इग्नोर करूंगी टेम्पररी पर्पस के लिए और 14 को देखूंगी। अभी 14 स्क्वायर्स के कॉलम में कहाँ लाई करता है, यानी कौन सी रेंज के बीच 14 आएगा। यानी ये 9 और 16 के बीच 14 आएगा, राइट? तो इसमें से मिनिमम जो स्क्वायर रहेगा यानी द स्मॉलेस्ट रेंज स्टार्ट वो लूंगी। तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ये वाले कॉलम में आएगा 3, मतलब ये ब्लॉक में 3 और इस ब्लॉक में 2/8। उसके बाद आई कंपेयर 9 विथ 14, मतलब ये 14 और 9 का कंपैरिजन करूंगी। तो यहाँ मुझे पता चला कि ये 14 ग्रेटर है। 14 is greater than square of 3, that is 9. तो ये बड़ा रहने की वजह से अपन यहाँ भी बड़ा नंबर लेंगे जो कि 8 है और यहाँ 3. So my answer is 38 as square root of 1,444. So 38 square is 1,444 and the square root of 1,444 is equal to 38. Now let's take one more example so that this concept would be clear. Now let's take one more example. Suppose if I take example as 441. 441. So here I write the number. Last digit है 1. तो 1 आता है यहाँ 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में. So again I'll create two blocks. In second block I'll write 1/9 in this way, and then I'll ignore these two digits and check with last digit. Now 4 comes between which range in the square column? So it is exact equal to 2 square. So I'll just write the number 2 here and then I'll compare this 4 with this number. So I'll compare 4 with 4. They are equal, so I'll take the smaller number here. Now what does the rule says? That I need to compare this number with the square. So if suppose assume this is x and this is y. So if my x is greater than y, then but obviously I need to take greater number from this block, and if my x is smaller or equal to y, I'll take smaller number from here. So my answer for 441 would be 21. So that is 21 का square will give me 441 and the root of 441 is equal to 21. Now taking one last example. So now let's take example 576. Let's take 5776. Let's take 5
776. I'll write the number and check with the last digit. So last digit is 6. So 6 is here and here, right? That is 4 and 6. So here also I'll create 2 blocks. In second block I'll write 4/6 and I'll ignore these 2 digits and check with 57. 57 lies between 49 and 64 and then minimum number is 49, that is smaller number, so I'll take 7 here. So I'll take 7 here. Then I'll compare 57 with 49. So here 57 is greater, that is x greater than y. So I'll take greater number from this block. So the answer is 76. So 76 ka square will give me 5776 and root of 5776 will give me 76 as answer. So this is how I calculate square root. Thank you guys and keep watching.